Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे माइकेलसन एंड मोलिस एक्सपेरिमेंट विषय रे पढ़िबा। तो देखो जो अर्थ आउ सन भितरे जो मझिरे गोटे कहा गला हाइपोथेटिकल मीडियम अछि ताकू ईथर बोली की कहा जाइथिला। तो सेटा सत ना मिछ ताकू टेस्ट करिया पई गोटे थियोरिटिकल जो ए प्रेडिक्शन हाइपोथेसिस ने आइथिला सो याकू एक्सपेरिमेंटली यार सत्यासत्य परीक्षा करिया पई गोटे एक्सपेरिमेंट करा जाइथिला माइकेलसन आउ मोलिंग द्वारा। ओके सो एटा होतिला गोटे ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट which is treated as a landmark in the history of physics. Okay, so এই experiment ro scheme को प्रथमे suggest करथिले Maxwell and later on it was utilized by Michelson and Morley in the year 1880. यार principle हला आमे जानिछु earth travels round the sun at a rate of about 18.5 miles per second or 3 into 10 to the power 6 centimeter per second. So in the short time of experiment the velocity can be considered as rectilinear. Okay, gote particular direction mane one dimension. Okay, how uniform madhya constant. Now assume that the ether through which light is propagated with a fixed velocity jota ame janichu light velocity hela c which is equal to 3 into 10 to the power 10 centimeter per second. So it is at rest. Okay, now gote beam of light ame neba which is sent from a source to an observer on earth. Okay, and the beam should take a larger time while traveling in the direction of motion of earth. Okay, earth जो direction रे travel करछि जदि beam से direction रे travel कला ताले it will take larger time than if it is traveling for the similar distance in the opposite direction. Okay, उल्टा direction रे जदि earth जो पटे travel करछि तार ठीक opposite direction रे जदि travel कला ताले obviously less time से शीघ्र पहुंची जिवो. So the purpose of this experiment was to measure this time difference from which the relative velocity between the ether and earth could be calculated. So eta hela dharo jo purpose ba principle ta. So let us now see the experimental arrangement of this setup. एठी देखो S होची the source of light from which the light beam is starting. आउ या आगरे गोटे आमे छोटो नेरो स्लिट भी रखी देइछु सो दैट आमे एठी कोलिमेटेड कोहेरेंट बीम गोटे यूनि डायरेक्शन रे पाइबा. अच्छा तापरे एटा हिट करूची गोटे ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट को जी जार पछ भाग को आमे सेमी सिल्वर माने पार्शियली सिल्वर कर देइछु. अच्छा नाउ एट दिस पॉइंट P कोन हबो एटा दुई भाग रे ई बीम टा डिवाइड हो गोटे पार्ट रिफ्लेक्ट होगी ऊपर को गला टुवर्ड्स प्लेन मिरर M2 तापरे एठी इंसिडेंट हला रिफ्लेक्ट हो गला नॉर्मल इंसिडेंस होगी पुणी वापस रिफ्लेक्टेड बैक होगी पळे आसीबो. तापरे आ गोटे पार्ट ए बीम रो कोन हबो जीवो टुवर्ड्स प्लेन मिरर M1 एठी भी सही कथा इंसिडेंट हला नॉर्मली अगेन रिफ्लेक्टेड बैक. ओके thereafter the two beams coming back from M1 and M2 they enter the telescope T and produce interference. Okay, ए जो source of light S जदि एटा मोनोक्रोमेटिक हे थांता माने सिंगल वेवलेंथ रो ताले एठी इंटरफेरेंस हे कि हमें डार्क आउ ब्राइट फ्रिंज देखिबा को पाइबा इन द फील्ड ऑफ व्यू. ओके अच्छा एठी गोटे एक्स्ट्रा ग्लास प्लेट आमे नेइछु C काहे कि नेइछु बिकॉज ये कॉम्पेंसेट करिवो एडिशनल पाथ ट्रैवल्ड बाय द फर्स्ट बीम. काहे कि एडिशनल पाथ ट्रैवल कला बिकॉज देखो ए जो पॉइंट P देखुछ एटा ए
ग्लास प्लेट जी रो पछ भागरे अछि। अच्छा पी रु जो फास्ट बीमटा रिफ्लेक्ट हला देख एठी ग्लास प्लेट को थरे या भीतर देकी गला एठी M2 को हिट कला वापस आसिला पुणी ग्लास प्लेट जी को पुणी भेदिकी एपटे टेलीस्कोप आड़ को गला। सो दुई थर ये ग्लास प्लेट को ट्रावेल करुच्ची ता भीतर दे किंतु सेकेंड बीम जदि देखा पॉइंट पी जेहेतु पछरे अच्छी सो एठी ये सीधा गला M1 रे हिट कला वापस आसिला पॉइंट पी को पुणी एठी वापस टेलीस्कोप आड़ को गला। सो ग्लास देखिए ये टोटली जाऊनी सो एडिशनल पाथ गुटे ई फास्ट बीमटा कवर करुच्ची व्हेन इट इज पासिंग थ्रू ग्लास। सो एक्जाक्टली सेम मटेरियल रही आमे गुटे another glass plate रखिबा which is called the compensating plate or compensator। केवल डिफरेंस है या पछ को आम आउ सिल्वर करके रखा नहीं केवल यार काम है या देकी सेकेंड बीमटा जीव पुणी M1 रु रिफ्लेक्ट होगी वापस जो आसो पुणी या देकी ट्रांसमिट हो सो दैट जो पाथ डिफरेंस एडिशनल गोटे अराइज करता ताकू ये कंपेनसेट करदेव यहाँ हूँ यार कम। ओके अच्छा तापरे एठी कहूँ जदि यही दुईटा जाक मिरर M1 आउ M2 जदि if they are situated at same distance or equidistance from this glass plate G and the apparatus is at rest ताहले the center of interference pattern can be observed on the crosswire of this telescope T। okay because path difference टा दुईटा जाक बीम पाई जीरो हो समान हो। okay अच्छा if the apparatus moves relative to ether suppose along this direction PM1 with a certain velocity ताले देखा जीवो जे जो टाइम दरकार करिवो लाइट टा in order to traverse the two paths will not be same। ओके हॉरिजॉन्टल आउ वर्टिकल जो दुईटा पाथ रे जाउची ए दुईटा पाथ को ट्रावर्स करिया पई समान टाइम आउ नेबो नाही बिकॉज ए हॉरिजॉन्टली जदी मूव करूची ताले ऑब्वियसली एबे बेसी टाइम नेबो। ओके अच्छा this introduces a consequent path difference between the two beams which in turn should result in fringe width। so this is your experimental arrangement। now let us see the calculation part। so for this let us go to the next figure this one। okay एटी फिगर रे देख जमती कहली जे सपोज एपारेटस टा मूव करुची टुवर्ड्स PM1 with a velocity small v। ओके अच्छा सपोज एटी जो PA it is equal to PB which is small d। ओके एटी small d हो गला PA आउ PB रो वैल्यू हॉरिजॉन्टल आउ वर्टिकल। C हो गला एटी वेलोसिटी ऑफ लाइट which is 3 into 10 to the power 10 centimeter per second आउ v जमती कहली it is the velocity of apparatus which is also the velocity of earth through ether। अच्छा तापरे जो आमे देखुचु जे रेटा ट्रांसमिट करि जाउची थ्रू द ग्लास प्लेट G माने ए जो ग्लास प्लेट G अछि सो आफ्टर ट्रांसमिशन इट इज मूविंग longitudinally towards the mirror M1। okay and it will have a velocity c minus v okay relative to the apparatus from PA dash। okay A dash हो गला एतिकी बिकॉज ये वेलोसिटी जब मूव करूची ताले ए जो ए रो न्यू पोजीशन एबे A dash को पळे आसीबो। ओके सिमिलरली जेतबेले A dash रु वापस आसीबो पॉइंट P भी एबे मूव करि जाइथिबो टू अ न्यू पोजीशन P dash। सो A dash रु P पर्यंत पहुंचीबा को जो वेलोसिटी दरकार करिवो ये इट विल बी c plus v। okay so assuming that ether is at rest and if t1 is the time taken by this ray to come back to the plane ताले ए t1 रो वैल्यू हो गला obviously distance by velocity। so t1 is एटा थरे जीवा बेल को एटा पुणी आसीबा बेल को सो d by c minus v plus d by c plus v एटी d हो गला जेमते कहली डिस्टेंस बिटवीन p and M1। ओके अच्छा तापरे एठी कौन करिबा हमें t1 रो वैल्यू टाकू बाहर करि परिबा इजीली याकू जदी हमें सॉल्व करचू एट द एंड देखो वैल्यू आछी यार 2cd by c into 1 minus v square by c square to the power minus 1 आउ एठी जो वेलोसिटी एज इट इज वेरी लेस देन योर c so you can apply the binomial theorem। so एठी देखो आसी गला binomial theorem जदी हमें पुट करिबा
एक्चुअली ये टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छी दिस शुड बी सी स्क्वायर राइट सो ये सी आउ सी स्क्वायर अच्छी सो यहाँ कटिगला सो 2d बाय सी हम बिकज ये सी स्क्वायर अच्छी ओके सो ये बाइनोमियल थ्योरम आम यूज कला केवल फर्स्ट टर्म टाक लिखा सो ये -1 अच्छी सो 1 प्लस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आम करदे ओके अच्छा तापरे नाउ लेट अस कंसीडर a ray which is going from p to m2 माने जो वर्टिकल डायरेक्शन सो जो वर्टिकली ये रेटा ट्रावेल कला p रु m2 आड़ को एटा पॉइंट b रु रिफ्लेक्ट करिवो ओके b रु जो रिफ्लेक्शन हैला इन द मीन टाइम ए पॉइंट p रो न्यू पोजीशन हे जाइछि कोन p डैश सो आमे कहिबा एठी जे ड्यूरिंग दिस टाइम द लाइट गोज फ्रॉम p टू b ताले b रो जो शिफ्टिंग हे जाइछि टू ए न्यू पोजीशन सपोज b डैश okay due to the velocity of the apparatus thus the light is reflected from the point b dash okay and due to the velocity of this apparatus by the time it reaches back p has already been moved to a new position that is p dash okay thus the beam which is going in the lateral direction follows the path p b dash p dash a path ठीक अच्छे सो एबे आमे ड्रॉ करिबा गोटे परपेंडिकुलर b डैश l ओके इट इज ए परपेंडिकुलर टू p डैश ठीक अच्छे so that effective velocity of light in the lateral direction that is b dash l is equal to square root of c square minus v square ये हेगला effective velocity okay ताले this can be seen by applying the triangle law okay ये जो b dash p l ए जो ट्रायंगल देखुच ओके ये आम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करी भी देखी परिबा एंड सपोज आम ये कहला t2 is the time taken by the light to go from the point p to m2 and come back ताले t2 रो वैल्यू हेगला 2 into because माने एठी 2 मल्टीप्लाई हेबो बिकॉज थरे जाउची पुणी आसुची सो 2 into b dash l by velocity of light along b dash l distance per velocity सो ये आम भैल्यू आम पुट करदेला या सल्व करी जिबा अगेन बाइनोमियल थ्योरम आम अप्लाई करि परिबा बिकॉज v इज वेरी वेरी लेस देन c सो ये t2 रो वैल्यू आसीगला दिस मच एबे आमर काम कोन ए t1 आउ t2 रो डिफरेंस बार करिवार अछि सो डिफरेंस डेल्टा t which is t1 minus t2 so ये आम वैल्यू पुट कला यार वैल्यूटा देखिबो आसीबो dv square by c cube ओके ये डेल्टा t हेगला डिफरेंस इन टाइमिंग taken by the two beams to come back to the point p ताले एबे पाथ डिफरेंस ए दुईटा बीम रो केते हेबो ना ऑब्वियसली the velocity of light into the difference in the timing that is c delta t so ये आम पुट कला यार डेल्टा टी रो वैल्यू सो यार वैल्यू आसीगला पाथ डिफरेंस ये डेल्टा इज इक्वल टू dv square by c square ओके अच्छा नाउ इन दिस टाइम सपोज आम कहिबा n हेगला नंबर ऑफ फ्रिंजेस which are shifted across the crosswire as a result of this path difference ताले याकू आम लिखि परिबा path difference is equal to nothing but n lambda एठी lambda हेगला wavelength of light ताले n lambda रो वैल्यू केते हला dv square by c square और n रो वैल्यू हेगला dv square by lambda c square now if the whole apparatus is turned through 90 degree पूरा पूरी 90 degree आमे बुलेई देला पूरा पूरी apparatus को ओके सो दैट मिरर m1 आउ m2 जो अछि तांकर एबे पोजीशन बा प्लेस चेंज हो गला ओके सो दैट द डिफरेंस इन पाथ विल बी इन ऑपोजिट नेचर ओके सो कॉन्सिक्वेंटली एबे कोन हबो 90 डिग्री जेतु बुले दीचु एबे इफेक्ट डबल हो जिवो ताले नेट फ्रिंज शिफ्ट केते हबो ने याकू हमें केवल डबल कर दबा 2dv स्क्वायर बाय लैम्बडा c स्क्वायर ओके माने 2n अच्छा ये जो नेट फ्रिंज शिफ्ट हमें पाइला दिस कैन बी इंक्रीज्ड स्टिल फर्दर by choosing a high value of d माने p रु जो आमे डिस्टेंस नउचु मिरर m1 रो ओके आमे जदि ताकू बढ़ाई देबा ताले ए फ्रिंज शिफ्ट को आमे इंक्रीज करि परिबा एंड दिस कैन बी अचीव्ड by making the beam to suffer to and fro reflection along the same path
तो ये देख गोटे एग्जांपल नहीं डी रो गोटे वैल्यू नहीं गला 11 मीटर, लामड़ा रो वैल्यू नहीं गला 5.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। तापर v रो वैल्यू एठी नहीं गला 3 इंटू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सी रो वैल्यू ऑलरेडी यू नो। सो एबे नेट फ्रिंज शिफ्ट आम कैलकुलेट करि परिबा। यार वैल्यूटा देख आसिला 0.37 माने ये कहूँ a shift of 0.37 fringe width can easily be measured by a sensitive instrument like your Michelson interferometer। ये इंटरफेरोमीटर आम यूज करके शिफ्ट को मेजर करि परिबा। किंतु एक्चुअल एक्सपेरिमेंट रे देखागला जे इन ऑर्डर टू सिक्योर constancy of temperature as well as to avoid the vibrational effects, the dimension of apparatus were reduced by making the arms PA और PB जो तुम vertical और horizontal arm अच्छी ताको हमको छोटो करने को पड़िबो। ओके, but this value D was increased by a system of mirrors। ओके, system of mirrors हमें गुड़ाए multiple mirrors हमें यूज करि परिबा in order to increase the value of small d। ता सहित रिफ्लेक्ट कर दे परिबा हमें ए रे को टू एंड फ्रो टू ए ग्रेट नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, जिते बेसी मिरर आम यूज कला सेते बेसी थर रिफ्लेक्शन हम आउ डी रो वैल्यू बढ़ी जीवो बिफोर रिटर्निंग द प्लेट पी। ओके, ना द होल एपरेटस याकू आम माउंट करिकी रखिबा ऑन ए मैसिव सैंड स्टोन which floated in a pool of mercury। गोटे मर्क्यूरी रो गोटे पूल रे आम गोटे सैंडस्टोन उपरे याकू माउंट करके रखिबा। and the apparatus was kept in slow rotation making one revolution in 6 minutes। ओके, यही हिसाब रे यार रोटेशन फिक्स करिबा जेमति कि ये 6 मिनिट रे थरे रिवोल्यूशन करिबो। so this is your calculation and theoretical part। let us now analyze the results। देखिबा जे केमति यार नेगेटिव रिजल्ट्स आसिला। सर देख ये कहूँ जो रिजल्ट्स माइकेलसन आउ मोली एक्सपेरिमेंट रू मिलला एक्चुअली सेटा हूँ अमेजिंगली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें पाइला। केमती देख या पॉइंट वाइज ये बुझे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जोटा ऑब्जर्व करागला बाय डिफरेंट साइंटिस्ट वर नॉट कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट रिजल्ट आसिला नहीं। देयर वेर सर्टेनली लेस देन 1/20th ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। ओके, एक्सपेक्ट करा जाइतिला जेतिकी भाग तार केवल 20 भाग रु भागे ही आमे पाइला रिजल्ट। ओके, माने भागे 20 भाग रु भागे ही माने कम रोचे। अच्छा, तापरे following two causes might have brought these negative results। कौन से दुईटा cause? number 1 रे कहूची जे it might have happened that at the time of experiment the earth had no resultant component of velocity parallel to the surface of earth। okay, जो velocity component parallel to its own surface एमती किसी अर्थ रो नहीं। सपोज एमती भी ही पारे। ओके, ड्यू टू द मोशन ऑफ सोलार सिस्टम एज ए होल। किंबा सेकेंड पॉइंट कहूँ जे एट ए गिवन टाइम ऑफ ईयर इट माइट हैपन फॉर टेरेस्ट्रियल एंड सोलार मोशन टू बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड हेंस दे माइट बी कैंसलिंग ईच अदर। बट ऑब्जर्वेशन जो देखा गला दे मेड at different times of the year gave the same negative result। तेणु यही दुई पॉइंट को भी ये खंडित कला। तापरे दुई नंबर पॉइंट रे कहूँ ट्रॉन्टन एंड नोबेल ये दुई जन साइंटिस्ट इन द ईयर 1904 they performed an electromagnetic experiment taking into consideration the fact that if there exists ether, suppose ether exists करूची, then there must be some relative motion between the ether and electric field। okay, so तांकर भी सही भलिया नेगेटिव रिजल्ट्स आसिला। ओके, पुणी आउ जने साइंटिस्ट जूस with improved apparatus at GE's plant in Jena। okay, it was able to show that if a positive result does exist, okay, printing mistake अछि, exist EXIST हेबो। so जदि गोटे पॉजिटिव रिजल्ट एक्जिस्ट करूची देन इट मस्ट बी स्मॉलर देन 1/1000 हजारे भागरु गोटे भाग रु भी छोट हेबो। ओके, ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्रिंज। सो याकू हमें इजीली कैलकुलेट करि परिबा नाही। अच्छा, so following conclusions we can see from this result, it can be concluded that the motion through ether could not be detected
either by optical experiment or by electromagnetic experiment. ether ଦେଇକି जो motion ହେଉଛି ତାର relative motion को ଆମେ experimentally ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ, detect କରିପାରିଲା ନାହିଁ. Thus the Michelson and Morley experiment has decided against the existence of stationary medium, that is the existence of a cosmic ether or absolute space is disproved. ओके, तेणु इथर एक्जिस्ट करूची जोटा हाइपोथेटिकल गोटे थ्योरी थिला ताकू ये खंडित कला. आउ जो डिफिकल्टीज ये एनकाउंटर कला इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द एब्सोल्यूट मोशन थ्रू ईथर should have suggested to scientists that the very concept on which the problem was based might be wrong. Okay, concept may be wrong ही पारे, and this was exactly what occurred to Einstein. तापरे आसिले सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जे कि सप्रेस कर दिले ए ईथर को altogether and thereby do away with the problem proposed. से एबे तांकर निजर एक्सप्लेनेशन देले जे एकु आमे केमती सॉर्ट आउट करि परिबा. परे पुणी तांकर कॉन्सेप्ट आसिला स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जोटा आमे आकु पढिबा. सो आउ टिके आमे ए जो माइकेलसन मोरली एक्सपेरिमेंट रो नेगेटिव रिजल्ट को टिके एक्सप्लेन करि परिबा. देखो এই माइकेलसन मोरली एक्सपेरिमेंट को बहुत केयरफुली एक्चुअली परफॉर्म करा जाइथिला, फिर भी नेगेटिव रिजल्ट्स आसिला. सो it seemed to favor more the ether drag rather than the stationary ether hypothesis. So explanation a negative result ପାଇଁ actually गुड़ाए explanation आसिला. So first explanation होची गुटे ether drag. ether drag माने it could be assumed that moving earth dragged the ether with it. निज सहित ether को भी टाणी नउची, so that there would be no relative motion between them. ओके, अर्थ आउ इथर जेहेतु निज सहित टाणी नेउची तेणु तांको भितर रिलेटिव मोशन किछि भी हेई परिबो नै, एंड द नेगेटिव रिजल्ट्स कुड बी इजीली एक्सप्लेन्ड. बट पुणी आसिला गोटे यार कॉन्ट्राडिक्शन दैट देयर वेर मेनी डिफिकल्टीज अगेंस्ट दिस एजम्पशन. कौन द इथर ड्रैग जो अच्छी इट मस्ट बी कन्सिडर्ड एज आइदर कंप्लीट और पार्शियल. जदि एटा कंप्लीट ड्रैग अच्छी ताले as the experiment of Michelson and Morley and others seem to suggest, the experimentally observed phenomenon such as aberration of light. Aberration होची light रो गुटे माने जोथरे कि व्यतिक्रम देखा जाए actual light fringe हमें देखिया को पाउना. Okay, it is the difficulty in formation of image. Okay, image formation रे गुटे difficulty होची aberration. गुड़ाए प्रकार aberration अछि, spherical aberration अछि, chromatic aberration अछि, तमे optics रे पढ़िबो. So याकू ये एक्सप्लेन करि पारला नहीं. नाउ इफ द ether drag was considered to be partial as suggested by Fresnel and Fizeau, then it is very difficult to devise a possible type of motion for ether which could be giving a value of aberration in agreement with the observation. Okay, so it is very difficult to devise to design such a instrument. Okay, and at the same time it could account for the negative results also. तापरे आछि गुटे आ गुटे जो माने बेस करिकि यार एक्सप्लेनेशन जे नेगेटिव रिजल्ट काहे कि आछि होछि लॉरेंज फिट्जरलैंड कॉन्ट्रैक्शन. सो देखो ए जो स्टेशनरी इथर रो जो हाइपोथेसिस टाकू पुणी जो माने डिफेंड करथिले, माने से माने कहउथिले जो माने जे एक्चुअली इथर एग्जिस्ट करूछि ताकू बुझेबा पई से माने कोन कले गोटे फॉर्मुलेट कले एक्सप्लेनेशन व्हिच इज नोन एज लॉरेंज फिट्जरलैंड और सिंपली LF contraction. So they contended that on account of electrical nature of matter, size and shape of a solid body depending on the interaction of electrical forces between the molecules may be altered by the motion of body through the ether perfectly at rest. Okay, acha. So the next showed that the electromagnetic equation which were not the same for bodies in motion as for those at rest, and in order to maintain the equation same in the two cases, so it was necessary to alter the space and time measurements. Okay, space और time measurement टाकू alter करबा को पड़िला. Okay, माने जेमति आमे देखु जे
आपको पढ़ा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रे भी गोटे फ्रेम अच्छी आ गोटे फ्रेम अच्छी सपोज द फर्स्ट फ्रेम इज एट रेस्ट द सेकेंड फ्रेम इज मूविंग ओके रिलेटिव मोशन रे ताले आउ स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सेमान को भितर जो रिलेशन सेटा अलगा आसीजिवो ओके अच्छा सो यहाँ हूँ गोटे स्पेशल वे रे आम देखागला जे स्पेस आउ टाइम मेजरमेंट को अल्टर करने को पड़ो एंड इन द कोर्स ऑफ इट्स mathematical analysis it was proved that there is a contradiction in the size of moving body okay as seen by the observer at rest so moving body रो size टा केमती contract बा कमी जाउची सेटा आपको देखिबा हमें length contraction भी okay तार भी अच्छी derivation so the contraction idea could easily prove the negative result of this Michelson and Morley experiment. Okay, but this solution was considered by many to be mathematical device. Okay, mathematically it is theoretical na. So at the most an ad hoc hypothesis which is proposed to get out of a particularly difficult situation without any experimental confirmation यार किसी experimental confirmation दे पारला नहीं so that এটা কেবল ଗୋଟେ theoretical mathematical जो explanation a Lorentz Fitzgerald construction okay later on Lord Rayleigh pointed out that such deformation of matter of purely electromagnetic origin should given rise to double refraction okay double refraction माने तुम ऑप्टिक्स रे पढ़िबो गोटे both the cases the vibrations are perpendicular to each other एटा हमें डिटेल को जीवानी एटा तुमरो ऑप्टिक्स रे अछि double refraction so he could not observe any such effect के Lord Rayleigh okay so this is all about your Michelson and Morley experiment Thank you.